ये मेरे पास एक केस आया था 82 ईयर्स का। इनका जो राइट लेग है उसमें TKR हुआ है, तो इनकी जो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी है वो भी अब बैठ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेड 4-5 तक पहुंच गई, तो उनको भी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। बट इस कंडीशन में होता क्या है कि पेशेंट की जो जो विल पावर होती है वो इतनी नहीं रहती। तो ये 80+ केस है। तो इन्होंने पता नहीं, आप उनको ज्यादा पेन हो रही थी, डॉक्टर के पास गया ऑर्थो वालों, तो इन्होंने ऑपरेशन के लिए बताया। तो ऑपरेट के बाद ये फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आई। अब जिस लेग पे ये हुई थी, ऑपरेट हुआ था DKR, वो तो अच्छे से वर्क कर रही है। आप देख सकते हो कि कैसे पेशेंट चल रहे हैं, उनकी लेग्स पे आप फोकस कर सकते हो। बट जो ऑपरेट नहीं हुई है उसमें अब प्रॉब्लम बन रही है, तो हो सकता है कि अब आने वाले वक्त में इनको भी ऑपरेट इस लेग का करवाना पड़े। TKR जो टोटल नहीं रिप्लेसमेंट आप बोलते हैं। Number first exercise is towel roll exercises for the activation of the quadriceps muscles, front of the thigh. There are two types of exercises, in long arc or short arc. Number second is SLR, straight leg raise, 10 repetition, 5-second hold. You can also start exercise with 5 repetition and 5-second hold. Number third one is knee bending exercise. Flex your knee or bending your knee maximum at the end range of motion actively. Number fourth, calf stretching. The physiotherapy will do this stretch at the back of leg, calf muscles. Now, the benefit of these exercises is to decrease swelling, increase range of motion and flexibility, to improve circulation, to enhance muscle control and strengthen the muscles involved in the lower extremity, to maximize patient mobility or flexibility with the goal of functional independence. Physiotherapists will recommend exercises that specially target the quadriceps muscles, hamstring, hips, as well as ankle and back of the leg. What are the exercises provided to physiotherapists to the patient? Some range of motion exercise, stretching exercise, strengthening exercise, balance and gait training. Next question is when to start exercises or start physiotherapy. You may start your exercises or physiotherapy treatment when you return to your ward or home after your surgery. You will experience some pain and discomfort initially, but exercises will help reduce your post-operative pain. First 3 days you do hot pack or cold pack.